फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मोटर्स। तो जैसे कि परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर्स होते हैं ये मोटर्स जो हैं इकोनॉमिकल होते हैं, हाई पावर रेटिंग से के हिसाब से करीब 1 किलोवाट तक। इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड कम्यूटेटर सेगमेंट इज लार्ज टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। दूसरा, कंपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड टू एलिमिनेट स्पार्किंग। Third, the diameter to length ratio is kept low to reduce inertia. Eddy currents are reduced by complete lamination of the magnetic circuit and by using low loss steel. Then, depending upon the manner in which the torque and speed are controlled, इसके basis पर जो है कि अगर आर्मेचर कंट्रोल है ये, so in this DC shunt motors in which the field is excited by constant DC supply, और यहाँ पर जो है फील्ड कांस्टेंट होता है, टॉर्क और स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन से ही करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर। and reversible operation is possible by reversing the armature voltage. फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर्स जो हैं, ये डीसी शंट मोटर्स इन विच आर्मेचर इज supplied with constant current or voltage. Since armature voltage is constant, torque is directly proportional to the field flux, and hence the torque can be controlled by varying field flux. And reversible operation is possible by reversing the field current. Advantages of DC servo motors: high output then from a 50 Hz motor of same size, linearity of characteristics achieved easily, and easier speed control. High torque to inertia ratio gives them a quick response to control signal. Low electrical time constant 0.126 milliseconds, and low mechanical time constant 2.3 to 40 milliseconds.